Hi guys, this is Rashi from Big FM and 2002 में कोई है से शुरुआत हुई। उसके बाद कभी केसर बन के गोलियों की रासलीला रामलीला में, कभी प्राची ताई बन के दुरंगा में, और ऐसे करते 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 look who's finally come to Big FM and मेरा गुड लक है कि I am here talking to Barkha. Hi Barkha. Hi, thank you so much. First of all, let me tell you, I think you are one of those girls who just wakes up pretty. Like, Trust me, it takes a village to make me look pretty. okay, we are not going to tell anybody about that because you look absolutely stunning. And I'm not just talking about how you look, I'm also talking about, of course, I've just recently seen Duranga. So let me first congratulate you by saying, प्राची ताई की जो क्यूरियोसिटी थी ना कि उसका कैसा कैरेक्टर है, वो ऐसा बैठ गया दिमाग में कि आई मैसेज गुलशन yesterday saying why did you guys do this? सीजन 2 भी साथ में रिलीज करना था. I know. Yes, So, I like that a lot. Everybody is like, okay, what are you doing? Are you the killer? Are you this thing? And I'm like, okay, just wait for season 2, guys. I mean, it's so insane. The story is so gripping, and plus, I think each one of you जो characterization है वो इतना perfect है कि which now brings me to Swaraj. Swaraj is coming on Doordarshan, and I know that we have seen you in characters which have been so versatile that now it's just almost like you fit into every role perfectly. Why did you choose to do Swaraj, and how did that come to you? Is what I want to start this interview with. Well, I think the first thing is I'm a very patriotic person, very proud of my country, very proud to be Indian. And that's primarily also because I come from a defense background. My father has fought wars for the country. So I think patriotism has been inbuilt in me. So the moment I got the opportunity to play a freedom fighter, which also I have never done in my career, so it was something new that I would get to do. But just the fact that I want, to play a freedom fighter, to place a character that has done something or contributed to the freedom of the country, I think that was, of course, one of the biggest reasons why I agreed to do this show. So yeah. So it's called Swaraj Unsung Heroes. यानी कि हम उन heroes की बात कर रहे हैं जिनका इस बार in fact we did a whole campaign also कि these are the heroes who have fought for our freedom, लेकिन उनकी कहीं बात नहीं की गई या बहुत कम की गई है. तो मुझे अपने जो कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. आपने कैसे रिसर्च किया? डिफेंस बैकग्राउंड से तो आपकी शायद हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गया है, आई एम अज्यूमिंग, बट स्टिल गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर अंडर द स्किन ऑफ सच अ पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट. हाउ डिड यू डू इट? So firstly, I have to tell you, I mean, in all honesty, I did not know who Rani Abakka was. So जब मुझे बोला कि रानी अबक्का का किरदार है, my first question was that who was she? So of course, Conchalo Pictures is very thorough with their research because they are the masters of historical shows. So उनका research बहुत solid रहता है. So of course they had a lot of research, a lot of material on who she was, So रानी अबक्का उल्लाल की रानी थी. उल्लाल जो आज के जमाने में मैंगलोर कहा जाता है, So these are things जो मुझे नहीं पता थी. और उन्होंने, so then my next question was like, अच्छा, she fought the British. And they were like, no, she fought the Portuguese, तब याद आया कि अरे Portuguese भी तो थे हमारे, इतिहास में. वहां से it started from there. British came much later. So definitely I think it was like a whole history lesson for me to read about Rani Abakka. And likewise 75 episodes, yes. कि कुछ लोग तो हम अपने टिप्स पे जानते हैं, झांसी की रानी and all of that इन औरतों के बारे में जानते हैं, but there are so many people. अगर मैं पूछूं आपसे कि आप 75 फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताएं, आपको शायद खुद ना पता हो, right? So this is the best way to tell people that these are the people who fought for our country, unsung heroes, जिनके बारे में आप जानते नहीं है, but I think their sacrifice deserves to be brought out to the people. So yeah, I am learning a lot about history through this show. It looks like it didn't take you even a second to reconsider your decision, and you must have been so proud to be associated with it. Not at all. I knew, like, from the time they told me, I was like, I'm going to do this. So yeah. तो चलिए थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाए. मुझे ये बताइए कि रानी अबक्का के बारे में अब तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत कुछ आप जानती हैं. उनकी 3 ऐसी क्वालिटीज बताइए जिससे आप खुद पर्सनली एसोसिएट करती. I think the first thing
is mental strength. I think she was an extremely strong woman mentally. So that is one thing I relate to. Secondly, the mother that she was, मतलब वो ऐसी माँ थी जिन्होंने बचपन से अपने खुद की बेटी को तलवार चलाना, घुड़सवारी, she brought her daughter up like a boy really. And जब उसकी शादी भी हुई, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी पसंद से शादी होगी, जो उस जमाने हम सोच भी नहीं सकते. So that is one thing that I really relate to. At that time also she thought that my daughter has the freedom to marry whoever she wants to marry. And I think the third thing was the ability to make difficult decisions. क्योंकि कभी-कभी लाइफ में ऐसे दो राहें आ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता क्या करें. बट उनके सामने she had a choice कि वो अपनी शादी बचाएं या अपने राज्य को बचाएं. And I think उन्होंने बिना झिझक अपने राज्य को चुना. That is a huge step for a woman to take, and वो भी उस 1800s के टाइम पर जहाँ पर खैर पता ही नहीं था कि नारी शक्ति इतनी होती है. But I think that is something that I also relate to. Wow, ये actually question मैंने अभी आपने बात की तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, because a lot of women watch these interviews and हाँ हम लोग obviously बात करते हैं A-listers की and big celebrities and everybody loves it, but it is people like Barkha, it is people like Gulshan and Drashti that people really relate to, क्योंकि आप लोग ऐसा लगता है कि हाँ अरे ये तो हमारे दोस्त हो सकते हैं यार, and they've made so big and they have carved a own niche, which brings me to my next question कि ये जो आपने एक अपनी अलग कहते हैं ना, जैसे मैंने गुलशन लोगों से भी कहा था कि यू हैव कार्व्ड योर ओन नीश, आपने एक अलग बना लिया कि हम जो भी रोल्स करेंगे वो इतना अंडर द स्किन जाके करेंगे कि वन रोल टू नेक्स्ट यू विल रिमेंबर मी एज माय कैरेक्टर. आपकी जर्नी कैसी रही है? और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी जो स्ट्रगल रहा है ना उसके बारे में, क्योंकि a lot of people aspire to become actors, so I would love if could focus on that a little bit. और जो लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी, बी रेडी टू स्ट्रगल. अगर आप वो नहीं कर सकते तो डोंट इवन बॉदर कमिंग टू मुंबई एंड ट्राइंग टू बी एन एक्टर. सो दैट इज वन. बट जहाँ तक मेरी स्टोरी है, आई थिंक आई स्टार्टेड वेरी अर्ली एंड आई मीन ऑलमोस्ट 20 years हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में. देखिए स्ट्रगल होता है. स्ट्रगल सिर्फ कि अच्छा मेरे पास खाने को खाना नहीं था और मैं सड़क पर सोई, दैट इज नॉट द ओनली स्ट्रगल दैट यू हैव. आई थिंक एक मेंटल स्ट्रगल होता है जो जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दैट मेंटल स्ट्रगल कैन मेक और ब्रेक यू. एंड हमारी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से जिनको वी हैव लॉस्ट दोस पीपल क्योंकि वो मेंटल स्ट्रगल हैंडल नहीं कर पाए. राइट. सो मेरे लिए आई थिंक वो मेंटल स्ट्रगल काफी था, बिकॉज आपको अगर एक शो मिल गया या एक ब्रेक मिल गया, दैट इज नॉट इनफ फॉर द इंडस्ट्री. हमारी इंडस्ट्री बहुत ही ब्रूटल है और मतलब मेरी जैसी लड़कियां आई थिंक हजारों हर रोज आती है मुंबई एक्टर बनने. सो आप कंपटीशन लेवल देखें तो आई हैव सो मच कंपटीशन कि मेंटली मैं भी एट पीस नहीं रह सकती कि अच्छा आज मैंने ये किया है, कल मुझे ये मिलेगा या नहीं, या कल मुझे कुछ अलग करने को मिलेगा या नहीं. तो वो एक मेंटल स्ट्रगल आई थिंक वो मेरा हमेशा से रहा है. बट आई थिंक ओवर द इयर्स आई एम ग्लैड दैट आई मैनेज टू कीप माई हेड ओवर माई शोल्डर्स एंड सेट कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितना स्ट्रगल करना पड़े, आई विल नॉट गिव अप एंड आई विल नॉट बैक डाउन. So that is, I think, my journey. I have done everything on my own. I did not have a father figure in the industry. मैं खुद अकेली आकर मैंने सब कुछ किया है. And I will say I'm one of the lucky people. I feel privileged कि almost 20 साल बाद भी मेरे पास काम की कमी नहीं है. मैं काम कर रही हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ. But if you ask me, it's like a 1 of 100 case. जो सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, जो एक्टर्स बन चुके हैं, उनको देखकर सबको लगता है कि अरे ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. लेकिन ये एक जिसको आप देख रहे हैं, उसके पीछे हजार ऐसे हैं जो आए, who failed, who gave up and went back, right? So that is my only, वो ध्यान में जरूर रखें. But otherwise it's a beautiful place to be in. I think कि आप ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हैं. We send messages across to the audience and I think that is a huge privilege that we have. True. अच्छा तो ये बताइए कि अब आप
because we know, we've seen you the kind of roles जो देख के लगता है कि आपने खुद ही choose करा होगा and you would have said yes. There was no pressure कि नहीं काम नहीं मिल रहा है तो चलो कर ही लेते हैं. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि now you are in the space where you can say no to people saying नहीं, this is not the kind of work I want to do. Or have you always been doing this? I've always been like that, actually. So I will not deny that I have done some work for money, saying ki acha, it's good money, let's do it. Yes, I will do it to the best of my ability. I will do it as convincingly as I can. But yes, there have been moments where I have done something just for the money. But broadly, I have always been a little this thing ki, to say no. And I think that is the one power that I have as an actor, because हमारी actors की life बहुत public होती है. And believe me, जब हम television show at least कर रहे होते हैं ना, I तो always say we are like bonded labor. कि हम सुबह से लेकर रात तक, मतलब महीने में 25 दिन ना कुछ कर सकते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ जीरो, ना हॉलिडे कर सकते हैं, ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. इट इज वी आर लाइक बॉन्डेड लेबर कि रोज जाना है काम पर और आना है, और इट्स दैट्स हाउ इट इज. बट the only power I have as an actor is to say no to something that I don't want to do. And I think वो मेरा शुरू से रहा है. Thankfully, I have done reasonably well as an actor, and I think now I am also in a position where I can say no to something. Yeah. So yeah. Well, on that note, I want you to give my audiences 3 reasons why they must watch Swaraj on Doordarshan. Oh my God. 3 reasons. Well, I think the first, of course, it is a matter of pride for our country to have a show like that. So I think the first reason is to watch it for the sacrifice that people have made for your freedom today. And the second reason, it is a very grand show. Like I said, Continental Pictures is it's like their forte is historical shows, but it is visually a very beautiful show. So just go to see the beauty of it because it is very beautifully shot. That is the second thing. And the third reason, I'm in it, so please watch it. Well, yeah, the third reason was kind of obvious कि जैसी आपकी performances रही हैं over the years, I think you're one of the bestest reasons why one would go and watch any show for that matter. Which brings me to कि जल्दी से बताओ future plans क्या हैं? What else are we going to see you in? So Duranka is already on air right now. I'm also another show of mine called Mukhbir is also coming on 5, hopefully in October. You will also see a little bit of me in Asur season 2, which is coming. And I'm also doing another web series with MX Player. So yeah, a lot of stuff on the web, which is all, I think in the next couple of months, my shows should be, releasing. So yeah, just look out for me on OTT. I'm there in quite a few shows right now. Well, and let me tell you, it's not just OTT. She might look a little humble on Instagram, but if you really stalk her nicely, and I mean with her consent, I think you might find some juicy gossip in it too. लेकिन वो हम लोग अभी नहीं करेंगे. फिलहाल Barkha, thank you so much for speaking with me. And this is completely off the records, but you are one of the celebrities who's just come like a friend has come to visit me for coffee, which is so amazing. Thank you so much for being so candid. 92.7